भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 27 मई 2024 को हमारे लिए समय है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 50 से लेकर 72 तक का सभी का संस्कृत एक एक स्पष्ट शब्द, संगीत में आनंद और फिर उसकी अंग्रेजी में व्याख्या प्राप्त करें। तो आइए आज अपने ज्ञान यज्ञ की यात्रा हम भगवान श्री कृष्ण जी के हरि भक्ति के साथ शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बुद्धियुक्तो जातीह उभे सुकृतिदोषकृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तः जहाति इह उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। संगीत में आनंद। जो बुद्धियुक्त है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी, वन योग युक्त है योग की यह कर्म में कौशल सभी। Here, a very positive aspect of intellect's yoga is present. For centuries, human beings are trapped in the web of birth and death while longing for the fruits of their deeds. But those who take the help of intellect's yoga are uplifted in this birth itself. That person is free from all his sins and holy deeds with the help of this intellect's yoga. Therefore, Lord Krishna says to Arjuna that you should do your karma while stabilizing yourself in this path of yoga. Whatever may be the situation, just do not deviate from your path. In this, your welfare is hidden. It is not easy to reach the depth of this karma without reading or listening to Bhagavad Gita, songs of God, which is why Lord Krishna agrees to become the master of Arjuna. This possession of knowledge also makes him the master of the entire world, because this knowledge will continue to guide people for centuries to come. Here you find that the moment you are detached from your own pleasures and you are focused on doing your share of duty as assigned to you by the Almighty, which is very simple. Take care of everyone from the results of your alone deed. And that's all. Yoga is only that much. The moment your actions are assigned with the one reason, will it make others comfortable? You also comfortable? Just do it. That's all. Okay, we close our topic of the today with this, and we will go in for the next shloka, shlok number 50. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कर्मजं बुद्धियुक्त
विनिर्मुक्ता हि फलम् त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्तः हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्. Let's take its musical sense. हित बुद्धि युक्त हो कर्म के फल त्यागते मतिमान है वे जन्म बंधन तोड़ पद पाते सदैव महान है. Now let's hear it in English. Sri Krishna says that people who are in the state of intellect's yoga renounce the fruits of their karma, actions, so that they can get freed from the bondage of. Compare your pronunciation. After pressing the button, touch the corresponding word and then record your voice to compare your गच्छन्ति नामयम्. My voice Let's is gachanti anamyam. Recording stop. गच्छन्ति नामयम्. My voice is gachanti anam. Let's get back. Okay. जन्म बंध विनिर्मुक्ताः. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव. वेदेषु Compare your pronunciation. Compare your pronunciation. After pressing the button, touch the corresponding word and then जन्म बंध विनिर्मुक्ताः. Let's record now. जन्म बंध विनिहि Recording stop. मुक्तः. जन्म बंध विनिर्मुक्ताः. जन्म बंध. Let's get back. एंड लाइक दिस हम लोग इस काम को करते हैं. आइए हम इसको इंग्लिश भाषा में सुने. Sri Krishna says that people who are in the state of intellect's yoga renounce the fruits of their karma, actions, so that they can get freed from the bondage of birth and death. They all attain salvation. The fruit of karma is always a cause of concern. However, what kind of sorrow and what kind of anxiety is for someone who gives up his affection towards these fruits of action? He becomes free from all kinds of bondage. Who does not get liberated after increasing his devoutness for Sri Krishna and taking advantage of his precious knowledge? यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्ता असि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. Now what does it mean? Let's hear it in English. When your intellect goes beyond the entanglements of illusion, then you shall become detached to what has been heard and what is yet to be heard. In other words, musically speaking, इस मोह के गंदले सल से पार मती होगी जब वैराग्य होगा
सब विषय में जो सुना सुनना अभी। दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक पहले हम संस्कृत में सुने। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समारावचना बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ एव अचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि. Beautifully tells you that in musical form श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जब। हे पार्थ योग समत्व होगा प्राप्त यह तुझको तभी। Confused by the text of the Vedas, when your intellect will stand unshaken and steady in the self, then you shall attain enlightenment. In this particular explanation by the book, there is a word required. The first word should have been not confused. It reads confused. It should be not confused or unconfused. So it should have read unconfused by the text of the Vedas. When your intellect will stand unshaken and steady in the self, then you shall attain enlightenment. Now here the difference between the Vedas and Srimad Bhagavad Gita is clear. Vedas aim at providing you Swarg. Vedas are the activities performed to please the Devas. Devas can give you a blessing by the permission of Lord Shri Krishna, and that blessing is always incomplete, not universal blessing. For example, you will get Swarg, but Swarg is like a bank balance. The more you enjoy it, the more you lose it. And a day will come when all this will finish and you will have to come back to the cycle of birth and death. While the enlightenment, which is beyond Vedas, is only and only through Srimad Bhagavad Gita. This thing will become to us very, very and very clear more we proceed on this. So happy enjoying the path of enlightenment. Take it easy, relax. We will be touching each shloka every day in 15 languages. Today is the day for a musical play around from shlok number 49 Hey, to 72. where are you? I'm missing you. Now let's go to the next shlok. स्थित प्रजनस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत विजेत किम्. It says स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थित धीहि किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम. म्यूजिकल मीनिंग. अर्जुन ने कहा, केशव किसे दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधि स्थित कहे, धीर बुद्धि के
प्रेम से बोलते बैठे चले कैसे रहे। Lord Sri Krishna presented the qualities of the person in Samadhi to Arjuna in such a way that Arjuna was now intrigued to learn more about it. He wants to know more about those people with a steadfast mind who have attained the Supreme God. He asks Lord Krishna, "O Keshav, what are the characteristics of such enlightened men? How do they speak? How do they walk? And how do they sit?" The lives of those who have reached this stage are the best in comparison to others. As it is, everyone wants to know about a successful person. Arjuna's mind was badly distracted by looking at his relatives on the battlefield. In such circumstances, it became very interesting for him to gain knowledge of this stage of total equilibrium or steady intellect. God speaks. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनः गतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते. These are the words or the directions of Bhagwan Shri Krishna ji. Let's hear it in musical form. श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, वो आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। The Lord said, "O Partha, when a man surrenders all the desires of his mind and remains satisfied in the self by the self, then he is said to be enlightened." So friends, you know what is enlightenment, and you can apply this particular parameter to check for yourself. Are you an enlightened person? Let's go on to the next shloka. दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थिति ही मुनि ही उच्यते. सुख में न चाह न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे, तेरे बुद्धि व मुनि राग एवं क्रोध भय से जो परे। इसको आप अंग्रेजी में सुनिए. The one who is not shaken by pain, has no craving for pleasures, and is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady wisdom. अगला श्लोक दूसरे अध्याय का 57वां. यः सर्वत्रानुविस्मयस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता.
यह सर्वत्र अनभिस्नेह, तत् तत् प्राप्य शुभ और अशुभ, न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये भगवान आपको किस प्रकार एक एनलाइटनमेंट स्टेट में पहुंचना है और वहाँ पर स्थित होते हुए अपने आप को कैसे चेक करना है कि क्या अभी आप एनलाइटन स्टेट में हैं या ऐसे बाहर आ गए। यहाँ बड़ा ही क्लियर है, मोक्ष कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। मोक्ष आपके मन की स्थिति है। मोह मतलब अज्ञान, क्षय मतलब खत्म हो जाना। मन चंचल है तो अज्ञान आता जाता रहेगा, परंतु उसमें से आप जब स्थिर हो जाएंगे, अपने दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे कि किस हालात में भी आप न तो सुख प्राप्त होने पर अपनी भावनाओं को उसमें बहा देना है, न ही दुख प्राप्त होने पर अपनी भावनाओं को संकुचित कर लेना है। नहीं, बिल्कुल अनअफेक्टेड रहिए, क्योंकि श्लोक नंबर 14 में आपने पढ़ा था ना, मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह अगम अपायिनः अनित्यः तान तितिक्षस्व भारत। सहन कर, और इस प्रकार आप स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट में रहेंगे। व्हाट इज स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट? वी कैन से कि यह एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आपसे अपने कर्म की कुशलता में कम से कम गलतियां होगी। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम वापस संगीत में सुनते हैं। शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न द्वेष ही, निह स्नेह जो सर्वत्र है, स्थिर बुद्धि होता है वही। That person who is not bound by attachments and is neither happy nor sad for anything good or bad, his mind is stable. यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संगीत की भाषा में हे पार्थ ज्यों कछुआ समेटे अंग चारों छोर से, स्थिर बुद्धि जब यूं इंद्रियां सिमटे विषय की ओर से। Just as a tortoise withdraws its limbs, the one who withdraws his senses from the sensory objects is known to have steady wisdom. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्स्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाः विनिवर्तन्ते निहि आहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसः अपि अस्य परं दृष्टा निवर्तते। होते विषय सब दूर है, आहार जब जन त्यागता, रस किंतु रहता ब्रह्म को, कर प्राप्त वह विभागता।
भगवान श्री कृष्ण जी आपको समझा रहे हैं कि ये यात्रा इतनी आसान नहीं है एनलाइटनमेंट की और मोक्ष की, इसलिए आप पहले से सावचेत होएंगे तो आपके लिए यात्रा आसान रहेगी, नहीं तो इसमें बार बार गलतियां होगी। वो गलतियां कैसी होती है, आइए उसको सुनते हैं अंग्रेजी भाषा में। By taking away the senses from its objects, a self-centered man gets detached from the object, but his longing for pleasure continues. However, his longing also disappears once he sees the truth. अगला श्लोक दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यतत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये है आपका दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक। इसका संगीतमय व्याख्या का आनंद लीजिए। कौन्तेय करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है, मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां बलवान है। हम पाते हैं कि हमारा मन चंचल है, पर उससे भी अधिक चंचल कौन है, हमारी इंद्रियां। ये एक नए ज्ञान का चीज आपके सामने है। मन को सभी चंचल बोलते हैं, किसी ने अपनी इंद्रियों को चंचल नहीं बोला है, पर असलियत में इंद्रियां चंचल है और वो मन को भी अपने कब्जे में ले लेती है। तो इसी को आप अंग्रेजी भाषा में सुनिए। O Kaunteya, even the mind of a wise man is forcefully carried away by his senses in spite of his efforts for keeping it centered. अब आप अगला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 61 नंबर श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। The most important secret of how to control your senses and pleasures seeking senses and from there to your emotions is here. Just see in the musical form what you understand from it. इंद्रियों को रोक बैठे योग युक्त मत पर हुआ, आधीन जिसकी इंद्रियां दृढ़ प्रज्ञ व नित नर हुआ। In English you will get much more clearer. Therefore, having controlled all his senses, one should remain in meditation, concentrated on me as supreme. For the one whose senses are under control, his mind is established in wisdom. Let's take to the Shlok 2.62. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। यहाँ श्लोक नंबर
दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां. These two shlokas give us how we falter, how and why we falter from our responsibilities, and what is the outcome of ultimately faltering from this responsibility. Part 1 is Shlok 62, says ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते. संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात्. So we will go up to this level only, which is in musical form says चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी, फिर संग से हो कामना से क्रोध भी. Thinking about sensory objects leads to attachment for them. Attachments give rise to desires. Unfulfilled desires bring anger. Now what happens next? Let's see. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Now here is the secret. As to more we involve and more we seek these sensory pleasures, what is the final outcome? Let's see it in musical form. फिर क्रोध से है मोह सुधि को, मोह करता भ्रष्ट है. यह सुधि गए फिर बुद्धि विनशे, बुद्धि विनशे नष्ट है. Anger brings in foolishness that further leads to unclear memory. Unclear memory destructs the intellect and ultimately brings downfall in the state of mind. In other words, we can say that in our day-to-day miniature activities, whenever we feel that we are frequently forgetting something, we don't know where we have kept it, that is surely the state that your emotions are too much involved in worldly pleasures and your attention is diverted. And this is what it tells you that your next step might lead you to disaster. So keep your sensory pleasures away. Just be in state of equanimity. Let's go to Shlok number 64. What does it say? It will provide a solution as to how we can do it. राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. राग द्वेष विमुक्तेः तु विषयान् इंद्रियैः चरण आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. Now it's English नहीं पहले musical form. पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियां अधीन कर, फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर. A self-controlled man, free from attraction and hatred, who moves through the happenings
with his senses under control, he attains peace. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशे बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसः ही आशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। म्यूजिकल फॉर्म में पाकर प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी। जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। Having attained peace, he becomes free from misery. Thus, with a peaceful mind, the intellect becomes steady soon. So we realize that it is the peace of mind which is the most important responsibility we all have. Rest will happen. So let's go forward to attaining peace of mind. Now how do we do it? Here it is. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। न अस्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति। अशांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य कुतः सुखम। Now let's take musical word. रहकर युक्त न बुद्धि उत्तम भावना होती कहीं। बिन भावना नहीं शांति और अशांति में सुख है नहीं। A man with uncontrolled senses and mind can neither have a firm intellect nor can he meditate. There is no peace without meditation. How can there be happiness without peace? Now here comes the who are the major obstacles in attaining that peace of mind. Here it is. इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इसी को आप यूँ पढ़ेंगे इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते तत् हरति अस्य प्रज्ञाम वायुः नावम इव अम्बसी। बेचारा मन, इसके बस में तो कुछ है ही नहीं। कौन आपकी शांति को भंग कर रहा है, इसका राज भेद सीक्रेट ये आपको मालूम पड़ा, जिसे आप संगीत की भाषा में सुने। सब विषय विचरित इंद्रियों में साथ मन जिसके रहे वह बुद्धि हर लेती पवन से नाव जो जल में बहे।
When the mind follows the line of objects through the wandering senses, then it takes over a man's wisdom, just as a strong wind takes over a boat on waters. रमेल तूफान आज बंगाल में आया हुआ है ना, उसकी हवा, वो जो मछुआरों की नावें हैं ना, उनका क्या हाल कर रही है। इसी प्रकार इंद्रियों के विषय में चरने वाली इंद्रियां मन रूपी नाव को उसी प्रकार दुखी कर देती है और वो आपके दुख का कारण बन जाता है। अगला श्लोक। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब भगवान बताते हैं कि what is the secret which can lead you to eternal peace. He says, tasmat yasya mahabaho निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संगीत की भाषा में, जब और से प्रिय विषय से इंद्रियां जब दूर ही रहती हटी, जिसकी सदा दृढ़ प्रज्ञ होता है वही। Therefore, O Mahabaho, a person whose senses are under his control, he is said to be established in wisdom. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। Very clearly here, amongst the all living beings, those whose senses are under control, they are a class above. They are a better citizens of the universe. This establishes here in the form of music. Let's hear it again. सबकी निशा तब जागता योगी पुरुष है, तात है जिसमें सभी जन जागते, ज्ञानी पुरुष की रात है। A self-controlled man is awake when it is night for all the beings. When all the beings are awake, it is night for the sage who sees the truth. Now here we come to a very clear conclusion that all those who are involved in the sensory pleasures, which is all around us, they are all in the state of darkness. But in the same state, the Mother Earth is only one. On this earth, all those human beings who have got excellent self-discipline. So, self-discipline is the secret. Let's go on to the next one. How should we behave? आपूर्यमाणं च प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। So here it comes, who
how to identify that you are in the state of self-discipline? This is the most important word in Srimad Bhagavad Gita, self-disciplined. So let's see how a person of self-discipline behaves. Here it is in Sanskrit. आपूर्यमाणं च प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम अधिगच्छति न कामकामी। आइए इसको हम संगीतमय भाषा में सुने। सब ओर से परिपूर्ण जल निधि में सलिल जैसे सदा आकर समाता किंतु अविचल सिंधु रहता सर्वदा। इस भांति जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी वह शांति पाता है न पाता काम कामी जन कभी। Even when water from various rivers flows into the ocean, it remains unchanged. Similarly, the self-controlled man who remains unaffected by desires attains peace, not the one who is full of desires. Clear? विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निःस्पृह निर्ममः निः अहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। Let's find it in musical form. सब त्याग इच्छा कामना जो जन विचरता नित्य ही मद और ममता हीन होकर शांति पाता है वही। A person who sacrifices his desires moves ahead without any craving, sense of possession or ego. He attains peace. Let's see the last shloka. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थनैनां प्राप्य विमोहति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। So, self-discipline, importance of it and its status in our human life is as follows. ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रचति।
ज्ञान की प्राप्ति समय नहीं लेती है। अंत काल में भी अगर आप एक पल के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो भी आपको ज्ञान रूपी निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। आइए संगीत की भाषा में सुने। यह पाठ ब्राह्मी स्थिति से पानर न मोहित हो कभी, निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठहर अंतिम काल भी। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।